So, Assalamu alaikum students. We'll start with inorganic chemistry for ASA levels, okay? और inorganic chemistry syllabus जो हमारा है, there is periodicity of period 3 और हम period 3 को as an example पढ़ते हैं. Definitely questions आपको period 2, period 4 के भी आ सकते हैं. और फिर हम ग्रुप 2 पढ़ेंगे. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के जो ग्रुप ट्रेंड है वो पढ़ेंगे. फिर हम ग्रुप 17 पढ़ेंगे और ग्रुप 17 जो है हेलोजेंस उनको डिटेल में पढ़ेंगे. सो दैट विल सम अप द मेन पार्ट ऑफ आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एएस लेवल. ओके, periodicity basically the word periodicity means we want to actually gain some knowledge regarding how the patterns changes across a period. Patterns of what? Patterns of physical properties, patterns of chemical properties. Or we want to wade through the period, but in detail. Okay, अगर हम ये कहें, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो वी आर लुकिंग एट द यूनिवर्स. बिकॉज फॉर अ लेमैन ये यूनिवर्स बहुत कुछ है, नो डाउट, और है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन एक केमिस्ट्री पर्सन या साइंस पर्सन के लिए दिस अभी तक जो हमारा नॉलेज है कि जितना हम जहाँ तक पहुँचे हैं, एक्सप्लोर किया है, द यूनिवर्स इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ अराउंड 100 एलिमेंट्स. अब क्या 92 नेचुरली अकरिंग एंड सम अदर्स. इन एलिमेंट से बनी हुई है और हर एक एलिमेंट एक ऐसा बीइंग है कि जिसकी इंतहाई बड़ी इंपॉर्टेंस है. इन एक एलिमेंट इज डेफिनेटली समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस यूनिवर्स. बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी यूनिवर्स का जो एलिमेंट है. और जब हम एलिमेंट कहते हैं, कोई क्या एलिमेंट क्या है, तो मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ मैटर. एलिमेंट द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ द मैटर. मीन हम अगर इसे डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं दैट काइंड ऑफ मैटर in which all the atoms are alike, they are same. That kind of matter in which all the atoms have same atomic number. Okay, सेम एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. एक मैटर को आप एलिमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम 3. एंड बाय नेचर, बाय चांस, दिस इज ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर्स आर इन अ सीक्वेंस, या प्रोटॉन नंबर्स आर इन अ सीक्वेंस. एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एलिमेंट. और इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि प्रोटॉन नंबर 1 है तो हाइड्रोजन है, एक्सप्लोजिव हाइड्रोजन. और प्रोटॉन नंबर 2 है तो चिल एंड कूल एंड नोबल हीलियम है. और प्रोटॉन नंबर 3 है तो फिर लिथियम है जो मेटल है. जस्ट एक प्रोटॉन चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टीज एंटायरली चेंज हो रही हैं. इट मीन हर एक एलिमेंट जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग ऑफ दिस यूनिवर्स दैट वी नो, या हमारा प्लेनेट. सो दैट काइंड ऑफ द मैटर इन विच ऑल द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, दे आर द एलिमेंट्स. और आप लोग जानते हैं राइट फ्रॉम द ओ लेवल्स. नाउ अरेंजमेंट ऑफ दिस एलिमेंट, साइंटिस्ट ने क्यों इंपॉर्टेंट जाना इन एलिमेंट्स को अरेंज करना? बिकॉज डेफिनेटली उनको ये आइडिया है था कि वट एवर एक्चुअली जो साइंस की ब्रांच भी हम पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में है, या वट एवर मटीरियल्स हमारे अराउंड हैं वो एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बने हुए हैं. तो क्यों ना इन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इन अ टेबल, ताकि वहाँ पे एक सर्टेन पैटर्न आए और स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो. तो पीरियोडिक टेबल इज़ बेसिकली मेड बाय द स्टूडेंट्स. और जब हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, तो simply periodic table, the table of periods, and periodic table is arrangement of elements. Periodic table is arrangement of these elements. और ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट आप जानते हैं किस फैशन में है?
Periodic table is arrangement of elements in order of their increasing प्रोटॉन नंबर्स। और ये जो बात हम कर रहे हैं बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, टू कट शॉर्ट द थिंग्स, कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर्स। प्रोटॉन नंबर्स आर इन अ सीक्वेंस and horizontal rows are formed, and we call these horizontal rows as what? Periods. There are 7 periods, and you know that a period number tell us about the number of shell. एक period में shell change नहीं होता. Proton number keep on increasing by a factor of 1, but shell remain the same. Total number of shells remain the same. अगर कोई एलिमेंट पीरियड 1 में है, हाइड्रोजन और हीलियम की तरह, उसमें सब में दोनों में एक शेल है। अब जानते हैं 1s1 और 1s2। और अगर कोई एलिमेंट पीरियड 2 में है, जैसे लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, तो सब में जस्ट 2 शेल्स हैं। अब किसी भी कॉन्फ़िगरेशन देखें, हम बोरॉन की देखते हैं, पीरियड 2 का है, एटॉमिक नंबर 5 है, तो मीन 1s2 फर्स्ट शेल कंप्लीट, 1 दिस प्रिंसिपल शेल, एंड 2 सेकेंड शेल, एंड 2 का 2s कंप्लीट, and 2p1. So it is a p block element because its electronic configuration finishes at p. But number of shells कितने हैं उसमें? 1, the number 1, this coefficient says 1, and 2 mean second period. तो ये पीरियड 2 जो है सबके 2 शेल्स हैं। फिर हम पीरियड 3 देखें, कहाँ से शुरू हो रहा है पीरियड 3? सोडियम 11 जो हमारा सिलेबस प्रिसाइजली द सिलेबस है। पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियड 3 को हम एज एन एग्जांपल डिटेल में देखते हैं। तो पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियड 3 कहाँ से शुरू करेंगे हम? सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड ऑर्गन 18। ये सारे नंबर्स हम ऐसे नहीं बोल रहे, नेचुरली अल्लाह ताला ने इनको इसी सीक्वेंस में प्रोटॉन नंबर्स दिए हैं। And they have unique, every element is unique from the other. Peculiar properties elements की जो हैं वो हैं because of their proton numbers. तो elements are arranged in order of their increasing proton numbers, and that actually makes the shape of the periodic table. और horizontal rows को आप क्या कह रहे हैं? Periods. And vertical columns को आप क्या कहते हैं? These vertical columns. These vertical columns are called groups. Okay, and we know that there are from 1 to 18 groups. The last group, 0 group you call it as sometimes, noble gases. Okay, and group normally from O levels you know this thing that generally a group number tell us about the valence electrons. But if you talk about group 1, 2, 3 and then group 4, 5, 6, 7 according to the O levels, okay. Here, normally, when we say group 1, it is group 1 lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Group 2 beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. And group 3 basically is now 13 because the wedge of element बीच में जो है हम उसे कहते हैं transition elements हैं। उनको भी हमने A levels में proper sequence के group number assign किए हैं। But group 13 mean they have 3 electrons in the last shell, and group 14 mean they have 4 electrons in the valence shell. Okay, and so on, these moves on, and elements are basically arranged in horizontal rows the periods and vertical column the groups. और generally अगर आप periodic table को हमेशा देखते हैं तो you find out that it has a structure like there is a wedge of element in between, and then we know that there is a staircase normally may not be present in some. And we have the elements containing S block elements, then we have D block transition elements, okay, and then we have normally the right side we have electronic configuration finishing at P block elements, और फिर we have some separate periods, okay, they have been separated from the original. क्यों? properties बीच में fit नहीं हो रही थी, periodic pattern में disturbance आ रही थी, and one of them start from lanthanum, we call lanthanides, and others start from actinium, we call it as actinides, but they are not in your syllabus. Normally in A levels
Okay, they are F block elements, inner transition elements. So generally periodic table आप जानते हैं कि there are S block, electronic configuration finishing at S, like magnesium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and P like chlorine finishing at 3p7. Sorry, 3p5. I mean last shell has 7. It should be 3s2 and 3p7, 3p5. And then we have the D block elements. आपने देखा कि started the transition from scandium. Although scandium is not a transition, but it has a D element finishing electronic configuration, finishing at D subshell. तो last shell जैसे zinc जो है वो 3d10 बनेगा. तो finishing at D mean they are D block. Finishing at F subshell they are F block. तो जनरल ओवरव्यू है ये पीरियोडिक टेबल का. वी हैव मेटल्स, वी हैव अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वी हैव टिपिकल ट्रू मेटल्स लाइक गोल्ड एंड कॉपर एंड आयरन एंड निकल, हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग, हाई डेंसिटीज, generally high densities, and very good electrical and heat conductors, like we use copper for copper wiring, silver, aluminum wiring, and cooking utensils out of silver and copper, iron, very good heat conductors. And then we have the right side of non-metals, like fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, or noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, सारे air में होते हैं. So that is the general idea of the periodic table जो आप लोग जानते हैं, general pattern. यहाँ पे हम अब period 3 को डिटेल में देखते हैं. Just an example to actually learn periodicity. Periodicity of physical properties. Of period 3. काफ़ी बातें ऐसी हैं ऑलमोस्ट जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिकल बॉन्डिंग में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सीखते हुए सारा कुछ हम करके आ चुके हैं. बिकॉज हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ करके आए हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़. सो इट मीन इट विल बी हेल्पफुल एंड plenty of things will be repeated from atomic structure and chemical bonding. So periodicity of physical properties of period, and period 3 as an example. Precisely in the syllabus. Much to memorize from there. और जब हम पीरियड 3 कहते हैं क्या, दैट स्टार्ट फ्रॉम सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, and argon 18. Start from sodium 11 and ends at argon 18. That is the period 3 for you. Now, periodicity of physical properties. We start from periodicity of atomic radius. Atomic radius means the radius of an atom. When we say atomic radius, it means radius of an atom. Like generally, when we say it is distance from nucleus to edge of electronic cloud. Distance from the nucleus to the edge of the electronic cloud. Generally, a generalized definition. But depending on, like हम अगर किसी मेटल का एटॉमिक रेडियाई देखें तो हम बताएं मेटल एटम्स, ओके, एंड मेटल एटम्स मीन डिस्टेंस. इफ द टू मेटल एटम्स आर देयर, the distance between the nuclei of two metal atoms, and half of this distance may be what? The radius. And if
we move along, like for chlorine it is diatomic, तो हम इसका covalent radii लेते हैं, because two molecules joining each other, the nuclei and the internuclear axis joining the two nuclei, this distance between the two nuclei is the internuclear axis, and half of this internuclear axis must be what? Atomic radii. You understand what atomic radii is from your mathematical knowledge, okay? So मुश्किल है noble gases का atomic radii find करना, because noble gases are monoatomic, one atom here and other there. They are all gases as well, monoatomic. So from the nucleus to the edge of the electronic cloud, finding the distance is difficult. Taking those photographs is difficult. X-ray crystallography is difficult. So normally कई जगहों पे आपको आपकी बुक में भी ऐसा है कि atomic radii normally data में mention नहीं होता. It's not that clear. But for others, we can take metallic radii, atomic radii, the covalent radii. Okay. Especially for covalent, we can take the distance half of the internuclear axis. अब इसका पैटर्न हम पढ़ने जा रहे हैं, और आप लोग पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम एटॉमिक रेडियाई प्लॉट करें अगेंस्ट व्हाट? एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स मीन वी स्टार्ट फ्रॉम sodium 11 and we end at what? Argon 18. Sodium 11, magnesium 12, aluminum 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, suppose chlorine 17, argon 18. Atomic radii generally decreases from left to right in a period. What I said, atomic radii decreases from left to right in a period. हम इस बात को जानते हैं ऐसा क्यों है, ऐसे इस तरह से इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और अगर आप एग्जैक्ट नंबर देखना चाहें फ्रॉम योर बुक और फ्रॉम एनी डाटा अवेलेबल, 0.157 नैनोमीटर्स goes for 10⁻⁹ meters goes for sodium atom. और जब हम क्लोरीन पे पहुंच रहे हैं तो दैट इज बेसिकली 0.099. सो मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड ऑब्वियस रीज़न हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बात सीखी, कैसा क्यों है? बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट nuclear force increases. Due to increase in proton numbers. But shell is constant. Shielding is constant. So more nuclear force decreases the size of atom. हमने एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में जनरल पैटर्न में अपार्ट फ्रॉम द डिप्स हमेशा क्या ली थी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टोटल साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, श्रिंक्स, जैसे हम ऊपर देख रहे हैं. सो सेम नंबर ऑफ शेल्स, shielding almost the same, one electron added makes not much the difference, but proton number is increasing by a factor of 1 plus. So same number of shells are more tightened, shrinks towards the nucleus, size decreases. So difficult to remove the electron from argon, from chlorine rather than from sodium. So sodium is so easy to lose the electron.
But of course, from left to right, the ionization energy increases generally. तो reason इसका यही है कि atomic radii decreases, the total electronic cloud shrinks towards the center, and it is difficult for the electron to be removed. We need more energy to knock out the electron. We need more energy to act against the nucleus, nuclear force. So that is atomic radii, the pattern of atomic radii. But when we talk about the pattern of ionic radii, ionic radius across period 3 as an example, ionic radii. तो पहले हमें ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि when we are talking about period 3, it means sodium will make 1 plus ion, magnesium make 2 plus, aluminum will make what? 3 plus. Okay. So when we are talking about the patterns of ionic radii, and अगर silicon है तो it should be 4 plus if it loses. But phosphorus, non-metal, group 5, 3 minus, sulfur group 6, 2 minus, chlorine group 7, 1 minus. Argon is not interested in any electron trade. So this is basically metallic radii, or cationic radii, including silicon. Basically it is the cationic radii. Cationic radius. And this is anionic radius. Cationic radius, anionic radius. Now, अगर हम ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करें, प्रेजेंट करें, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं. Ionic radius. And ionic radius is, it is measured in nanometers. And then you plot the elements there, atomic numbers, elements. तो कैटाइन इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल एटम. जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जाएगा उतना छोटा और होता जाएगा. सो इट मीन सोडियम, एटॉमिक रेडियाई भी सोडियम का ज़्यादा था, फिर लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, तो सोडियम का आयनिक रेडियाई ज़्यादा है, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन. बट नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, देयर लास्ट शेल रिमेन इंटैक्ट, सो देयर एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई इज हायर, एज क्लोरीन 1 minus. Then we have phosphorus. We have phosphorus. After silicon we have phosphorus 3 minus, and then gradually that it is sulfur 2 minus, proton number भी ज़्यादा हो गया, and chloride जो है that is 1 minus. But highest किसका है? P3 minus का. Because 3 electrons are being added, they suffered more repulsion from already present electron. And to stabilize the repulsions and energy, electronic cloud spread a bit to minimize the repulsion, to gain the stability. And 3 electrons added mean shielding is more definitely. So, an ionic radii is higher of phosphorus 3 minus as compared to what? हमारे पास S2 minus, Cl1 minus, proton number भी ज़्यादा है इसका. So definitely more nuclear force है 1 minus पे as compared to P3 minus पे 15 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं क्लोरीन को. तो from left to right we have seen a pattern like this. Cationic radii decreases, anionic radii increases, and generally this is the pattern. As the proton number increases, there is a slight shrinkage in S2 minus and Cl1 minus because electron added are also less. So it means anionic radii, cationic radii is lesser than the original atom. When we say cationic radius lesser than original atomic radii, and reason is obvious. Cationic radii lesser than the original atom. Cation is one shell,
less, effective nuclear charge is more. You know that atom is neutral. तो एटम जब था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम थे, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम्स इनटू द गेम जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगते हैं. So cation is one shell less, effective nuclear charge is more. So rest of shells are more tightened. Towards nucleus. But when we say anionic radii, anions have electrons added, more shielding, repulsions increases, radii is more. Then original atom. Radii is more than the original atom. There is anionic radii. So periodic pattern of what? Periodic pattern of ionic radii, periodic pattern of cationic radii, anionic radii to be precise. Then class, periodic patterns of melting point and electrical conductivity. Core issues in chemistry, inorganic chemistry, and you have plenty of MCQs and small questions. And core knowledge आपने improve करना है, especially अपनी book को go through करके, understand करके graphs को, और section reviews and questions करके. Then you move on to the topical questions. But first, your book questions. वो आपका कोर स्ट्रेंथन अप करेंगे. इंटरनल बुक रीडिंग, टेक्सचुअल मटेरियल अंडरस्टैंडिंग, नो शॉर्टकट नोट्स एंड नथिंग लाइक दिस. पीरियोडिक पैटर्न्स ऑफ melting points. Electrical conductivity. Generally, you moved across period 3. अगर हम period 3 को example लें and you plot their atomic numbers, melting points. So we know that we start from sodium, period 3 start from sodium, magnesium, aluminum, then we have silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. So melting point metals, generally for sodium, for magnesium, aluminum, but silicon is a macromolecule. And then we have the non-metals like phosphorus, sulfur a bit higher, S8 जो होता है, and then we have chlorine and argon. So check a general rough graph representation. और क्यों इस तरह? Because sodium is a metal, magnesium is a better metal, aluminum is much better a metal because 3+ it has the cationic size charge and 3 electrons delocalized. Metallic bond किस तरह strong होता है कि more electron delocalized, one factor, and higher the charge density, the magnitude of the charge. So sodium is a weaker metal, softer metal, can be cut with a knife, as compared to aluminum got much better tensile strength.
बट सिलिकॉन जो है, कार्बन, सिलिकॉन, दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स. एंड देन वी हैव द नॉन मेटल्स, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ओके, सो एक्सप्लेनेशन किस तरह बेस करेगी आपकी कि सोडियम इज अ सिंपल मेटल, 1+, वही जो हम बॉन्डिंग इन स्ट्रक्चर में पढ़ के आए. एंड delocalized electrons are also less. You can use this simple explanation diagram to elaborate the concept by कि electrostatic force of attraction between 1+ ion of sodium and delocalized electron is lesser as compared to magnesium, because magnesium cationic charge will be 2+ and aluminum will be 3+, more delocalized electrons, higher will be the strength of metallic bond. लेकिन जब आप सिलिकॉन की बात करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, इतना हाई जंप क्यों आया? बिकॉज सिलिकॉन इज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, वी नो दैट, जस्ट लाइक डायमंड. सिलिकॉन एंड सिलिकॉन ऑक्साइड, इट्स ऑक्साइड एज वेल, and it moves on, and the strongest thing of the nature is the covalent bond, because that is the electrostatic force of attraction between nuclei and the shared electronic cloud. What I said, between the nuclei and the shared electronic cloud, strongest of the electrostatic force, covalent bond. You need high bond energy to break the covalent bonds, and if there are continuous covalent bonds, it means you want to melt it, you have to break some covalent bonds. It's not a simple molecule that you heat and intermolecular force break apart. यहाँ पे आपको covalent bond तोड़ना पड़ता है. And always say it's a giant covalent structure with infinite number of covalent bonds. And in order to melt it, you have to break some covalent bonds. Remember, that's why diamond got a melting point of 3500. Silicon also very high melting point. क्यों? Covalent bond तोड़ने पड़ते हैं. Unlike जब आप phosphorus की बात करेंगे तो आप कहेंगे phosphorus consists of just 4 atoms per molecule, P4. And when it is P4, it means it is simple molecule. Do always use those terminologies. Simple molecule, molecular structure, non-polar, because they are all like atoms, there is no difference किसी ने किसी के इलेक्ट्रॉनिक खींचे हुए. So it is perfectly non-polar. Simple molecular structure, non-polar, depends only on weak intermolecular force. Weak what? कौन सी होती है non-polar में? Weak IDID force. Weak IDID forces. So lesser energy to melt. बट अब फॉस्फोरस में, P4 में और S8 में कंपैरिजन करें तो वहाँ आप क्या बताएंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ IDID फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स इज हायर इन S8 एज कंपेयर टू व्हाट, P4. क्यों? कि इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एट एनी इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्चुअली स्वे टू वन साइड by chance. So it develops an instant dipole. When it develops an instant dipole, it becomes polar, negative, positive, just like a permanently polar molecule for that particular instant. तो अपने नेबर को क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज, उसके नेगेटिव चार्ज को पुश करेगा, रिपेल करेगा और वो दूसरी साइड पे चला जाएगा. तो उसके अंदर इसने इंड्यूस कर दी डाइपोल फोर्स, और उस टाइम पे इनके बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल फोर्स आ जाएगी. And it keep on shifting and moving. So it's not that strong. But strength of instantaneous dipole-dipole force increases if number of protons, number of electrons increases, number of atoms per molecule increases. And for some molecules, the contact point between the molecule increases. Okay, आप जानते हैं. इसलिए हम आइसोमराइज करते हैं पेट्रोल को टू रिड्यूस द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स एंड रिड्यूस द इंडक्शन पॉइंट्स, सो द डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेक्स प्लेस. तो कंपैरिजन जब भी आएगा किसी मॉलिक्यूल का दूसरे से,
वो सिंपल इंड्यूस डाइपोल फोर्स का हो, तो आपने सबसे पहले देखना है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, आप कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल का ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस डाइपोल भी फिर ज़्यादा हो जाएगी. तो ये वर्ड्स आप यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन टू गेन मार्क्स. So do go through your textual material from the book, okay, to get a better idea, always to improve your core knowledge. तो जब आप देखते हैं detail book notes rather than shortcuts, remember this thing. You need depth of the knowledge to strengthen your core. I always say this thing. And then you have your knowledge, and then you can actually apply that knowledge on the past papers. Directly नहीं करने. तो बुक के जो क्वेश्चंस हैं, सेक्शन रिव्यूज, एंड ऑफ चैप्टर, दे आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन. तो अब क्लोरीन का देखें तो ग्राफ में क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट गैस है, नेगेटिव में गया हुआ नीचे, बिकॉज क्लोरीन है भी डायटोमिक, जस्ट 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल. सो and same goes for the electrical conductivity. अगर पूछे electrical conductivity, you know that metals got delocalized electrons, and electrical conductivity increases as the delocalized electron increases. But for this graph can't be used because silicon is not, and then we have the non-metals, no delocalized electrons, all electrons busy in bonding, no valence shell electron there, but they have 1 free, 2 free, 3 free delocalized electrons. The free is not the right word, delocalized electrons. And strength of electrical conductivity also depends on maximum number of delocalized electrons, increase in the delocalized electrons. So that is periodic pattern of melting point and electrical conductivity. Then class again a repetition. That is what? Periodic patterns of first ionization energy 1 across periods. And if you look at across period 3, delta H ionization in kilojoules per mole, we normally take it as. And elements right here, starting from sodium till argon. So you'll find out sodium ionization energies. Ionization energy of sodium. Then magnesium must be higher. Then there is a dip at aluminum. Then silicon higher. Sodium 11, magnesium 12, aluminum 13, silicon 14. Then phosphorus 15 increases. Sulfur there is a dip. Then increase, chlorine 17 and argon 18. Just check the pattern. Increase, dip, increase, then dip, increase. Or we have done this in detail in atomic structure. We know that from sodium 11 till magnesium 12, this is sodium 11, proton number increase हो गया, nuclear force increase. That's why it is difficult to remove the electron from magnesium than sodium. But from magnesium to aluminum, first time it happened in a period that electron is removed from 3p. Magnesium is removed from 3s. Detail हमने देखी atomic structure में. And 3s mean it is closer to the nucleus as compared to 3p higher. 3s has less shielding, but 3p has even shielding from 3s2 core and rest of the cores. So there is seen a dip. Although proton number is increased, but this is being neutralized by the fact of subshell change, the distance increase, and the more shielding. Then from aluminum to silicon, this factor is being neutralized here. So silicon proton number is the dominant force, increases. Phosphorus proton number is the dominant force. But from phosphorus to sulfur, you find out there is again a dip. And first time moving in a period, we have a valence shell in which there is a pair of electron present. And that spin pair repulsion is the sole reason that increased proton number of sulfur 16 actually is not sufficient enough to pull the electron tightly. Rather, spin pair repulsion is the dominant factor. And lesser energy is needed to remove this electron as compared from the phosphorus. And then from sulfur to chlorine, this factor is being neutralized here of spin pair. So chlorine proton number again dominate. From argon, proton number is the dominant force.
Increased proton number, increased nuclear force, shell tighten towards the nucleus, difficult to remove the electron. But spin pair repulsion is the factor here, just like in period 2. Okay, this is the case of period 3. In period 2, we have boron beryllium dip, and then we have nitrogen to oxygen dip, because phosphorus last shell has 3 electrons, p cell, they are perfectly stable, 1 electron filled in each, because electrons are filled to give the maximum number of unpaired electron, lesser repulsions. Cool it is as compared to sulfur, where first time the last shell has a pair. So spin pair repulsion is the dominant force. That is periodic patterns of ionization energies. And then class, from your book now, remember, book of A-levels chemistry from Roger Norris. Okay, the best book for A-levels, okay, or any book you are using, you need to do the section reviews. From Roger Norris, from question 1 to question 5. Section reviews. They will enhance your knowledge. You can also find these answers there in the net, okay, or in the group. But these questions will actually improve the knowledge. Like it says, why does sulfur have a lower melting point than silicon? And you explain that sulfur is a simple molecule. It has 8 atoms per molecule, depending on instantaneous dipole-dipole forces, which are much weaker as compared to silicon, which is a macromolecule, giant covalent structure. Atoms are knitted with each other with strong covalent bonds. In order to melt, we have to break the covalent bonds. Or why is magnesium a better electrical conductor than phosphorus? You'll say magnesium is a metal, it has delocalized electron, but phosphorus is a non-metal. It has no delocalized electrons. So that is basically the first lesson, that is the periodic patterns of physical periodicity, periodic patterns of what? Physical properties across period 3. And you call it as periodicity because there is a certain patterns of periodic properties. There's a certain patterns of properties that are actually seen in a period. And the same pattern is repeated in the other period. Like in period 2, we have the same ionization energy graph. But elements are different. It is lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9. But it just looks like period 3. So periodicity is the reoccurrence of the properties that are seen in a period, and they are seen in the other period as well. And some properties are periodic properties. Like ionization energy is a periodic function, periodic property. That it has a pattern in period 2 copied in period 3. So it's a periodic property. So that is the end of discussion regarding our first lesson.